in the town of Nazareth lived a young woman named Mary. She was engaged to be married to Joseph, a carpenter. One day, the angel of the Lord appeared to her. The angel said to her, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women." Mary was troubled at the saying and considered what manner of greeting this was. And the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold,
you will conceive in your womb and bring forth a son who shall be called Jesus. How can this be, since I do not know a man? The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. The Lord, let it be on me according to your word. The angel departed from her. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to disgrace her publicly, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to marry Mary, for the baby is conceived by the power of the Holy Spirit, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Joseph arose from sleep and did as the angel of the Lord commanded him. Soon after the angel's visit, Mary and Joseph were married. That time, Emperor Caesar Augustus ordered all people to register themselves in their hometown. So Joseph took Mary to his hometown, Bethlehem. As soon as they reached Bethlehem, Joseph started looking for a place, as Mary was tired. But every place they went to, they were turned away. So the innkeeper took Joseph and Mary to the stable. Joseph made a warm place for Mary, and in a few hours Mary gave birth to little baby Jesus. Mary wrapped Jesus in strips of cloth and gently laid him in a manger. Not far away, some sleepy shepherds were watching their sheep. Then suddenly an angel of the Lord appeared before them. Do not be afraid. I bring you good tidings of great joy, which will be for all people. For there is born to you in this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord.
Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord had made known to us. Rejoice, our Savior is born. Yes, the bright star will lead us to the stable where the Savior is lying in the manger. Let's go and see this amazing thing that has happened. Meanwhile, in the far east, a star appeared to the three wise men. They realized that the star was a sign that the king of the world had been born. To find the one born to be the king. We bring gifts of gold, frankincense, and myrrh to honor him. May our gifts be a symbol of our reverence and worship. This Christmas, as we celebrate the birth of Jesus, let us remember that the true spirit of Christmas is found in giving love, giving kindness, and giving hope to those around us. It is about sharing the message of peace and goodwill, just as the angels proclaimed on that holy night. May the story of Nativity inspire us to live with humility, compassion, and love in our hearts. Let us carry the light of Christmas into the world and make it a place where peace and joy reign, just as we remember that first Christmas night. Let
कैसे बालक ईसा का जन्म बेथलेहम में हुआ था और हमने इस दृश्य को देखकर सचमुच अपने आप में महसूस किया। जोरदार तालियों से हम इनका बच्चे सचमुच उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और हमें उस मुकाम तक पहुंचाया जिस रात बालक ईसा ने जन्म लिया था। अभी आपके सामने मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारी समारिटान सिस्टर्स जो सामलोक से हैं, वे अपने क्रिसमस डांस के साथ उपस्थित होंगे।
Merry Christmas. लहर है आज जहां में, छाई बहार है आसमान में। गूंज उठा आज यहाँ सारा संसार, दूतों में गाया जय जयकार। खुशियों की लहर है आज जहां में, छाई बहार है आसमान में। गूंज उठा आज यहाँ सारा संसार, दूतों में गाया जय जयकार। दूर गगन में चमकता सितारा कर रहा है हमको इशारा। दूर गगन में चमकता सितारा कर रहा है हमको इशारा। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। जन्मा है, देखो जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया। पावन धरती के बेतलहम में, चरनी में लेटा कपड़ों में, मानव बन आया इस दुनिया में, शांति का संदेश दिया हमें। पावन धरती के बेतलहम में, चरनी में लेटा कपड़ों में, मानव बन आया इस दुनिया में, शांति का संदेश दिया हमें। आओ हम मिलकर झूमे नाचे, दूतों के संग संग हम भी गाएं। आओ हम मिलकर झूमे नाचे, दूतों के संग संग हम भी गाएं। क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। जन्मा है, देखो जन्मा है, जन्मा है राजा हमारा। आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया। सबके लिए है शुभ समाचार, जन्मा है आज यीशु तारणहार। अंबर से तारे तोड़ लाके अपने घर को सजाएंगे।
सबके लिए है शुभ समाचार, जन्मा है आज यीशु तारणहार। अंबर से तारे तोड़ लाके अपने घर को सजाएंगे, दिल से दिल को जोड़ेंगे हम, कल के आंसू भूलेंगे हम, दिल से दिल को जोड़ेंगे हम, कल के आंसू भूलेंगे हम, क्योंकि जन्मा है, देखो जन्मा है राजा हमारा। जन्मा है राजा हमारा। आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया, आया रे आया क्रिसमस, आया रे आया। Good evening and Jai Jesu once again to one and all. It's with great joy and deep reverence that we welcome all of you to this second part of Christmas gathering. We are happy to have you with us, the distinguished leaders whose presence enriches this occasion. It is an honor to welcome His Excellency Archbishop Right Reverend Vincent Ain, the Archbishop of Ranchi. We are truly grateful for your benign presence on this occasion. A warm welcome to you, dear Bishop. We are also honored to welcome Reverend Father Ajit Kumar Kes, SJ, the Provincial Superior of Society of Jesus. We are privileged to have you with us this evening. A hearty welcome to you, dear Father. On behalf of CRI, I extend our warmest greetings to Reverend Father David Khalpo, the Vicar General, all the leaders of religious congregations, Mother General, Provincial Superiors for your esteemed presence. I also welcome all CRI members, delegates of other churches, members of Catholic Sabha, Mahila Sangh. Let's welcome each other with a round of applause, please. May this gathering be a time of reflection, fellowship, and renewed faith as we draw closer to the true meaning of Christmas, the gift of God's love and peace. What better way to usher in the joy of Christmas than through the beautiful music on the season? We are delighted to have with us a talented band who will lead us in a joyful carol. Their melodies will fill this space with the spirit of Christmas, reminding us of the hope, peace and joy that this season brings. So without further delay, please join me in welcoming St. Xavier's Band as they begin the Christmas carol to set the tone for our celebration. Around you, virgin mother and child.
अंधेरा करे नरे बधेरा करे लिया लाठी जैसे करे लिया लाठी जैसे शीत पानी चढ़ा
सुंदर मसीह राजा के दिल जागरे हरि कृष्ण अमर प्रभु जी के सन सुंदर मसीह राजा के दिल जागरे जय हे राजा यीशु जन्म ले हवा के दिल जागरे हवा सगे सगे जागरे यीशु जन्म ले हवा के दिल जागरे हवा सगे सगे जागरे हवा भाई रे हवा बहिन रे राजा के दिल जागरे हवा भाई रे हवा बहिन रे राजा के दिल जागरे जन्म लेला हवा के दिल जागरे हवा सगे सगे जागरे यीशु जन्म लेला हवा के दिल जागरे हवा सगे सगे जागरे St. Xavier's Choir, for your enchanting voices and make us feel delightful on this occasion. To add more delight to the festivity, here comes the Bethany candidates with a rhythmic dance. Let's join them to thrill the energy as they jump with joy at the birth of Jesus. गगन गा रहे हैं दूतगण पैदा हुआ है मसीह आओ सभी जन दर्शन कर लो चरनी में लेटा मसीह गगन गा रहे हैं दूतगण पैदा हुआ है मसीह आओ सभी जन दर्शन कर लो चरनी में लेटा मसीह झूमे हम नाचे हम गाए मिलके तराने आज हम झूमे हम नाचे हम गाए मिलके तराने आज हम जगत में है आए मुक्ति का मार्ग दिखाए आपस में सब प्यार करो ये संदेशा लाए झूमे हम नाचे हम गाए मिलके तराने आज हम झूमे हम नाचे हम गाए मिलके तराने आज हम
के गाओ, नया सवेरा जागो। गीत खुशी के गाओ, नया सवेरा जागो। हम सबके पापों को मिटाने जब में आया मसीह। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे धरती गगन, गा रहे हैं दूतगण, पैदा हुआ है मसीह। आओ सभी जन दर्शन कर लो, चरनी में लेटा मसीह। झूमे धरती गगन, गा रहे हैं दूतगण, पैदा हुआ है मसीह। आओ सभी जन दर्शन कर लो, चरनी में लेटा मसीह। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। झूमे हम, नाचे हम, गाए मिलके तराने आज हम। Of our Lord, reminding us of the joy, hope, and love that the season brings. Stage is yours, dear novices. जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजआज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। आप
कृपया नाम बोलिए। जोसेफ। और आपके साथ ये कौन? इनका नाम मरियम। आपका नाम दर्ज हो चुका है, आप जा सकते हैं। शुक्रिया। वे वही थे जब मरियम के गर्भ की पूरी हुई। क्या आपके यहाँ सराय में जगह मिल सकती है? यहाँ जगह नहीं है, आप कहीं और चले जाइए। क्या सराय में हमें जगह मिल सकती है? माफ कीजिए, हमारे यहाँ तो जगह नहीं है, आप आगे चले जाइए। क्या सराय में हमें जगह मिल सकती है? हमारे यहाँ तो जगह नहीं है, लेकिन हमारे सराय के बगल में ही एक गौशाला है, आप वहाँ रुक सकते हैं। आइए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चन्नी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्व में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले।
इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और हेरोद राजा के पास आकर कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है जिसे वे दंडवत करना चाहते थे। हेरोद यह बात सुनकर घबरा उठा और अपने शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछने लगा कि मसीह कहाँ जन्म लेंगे। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलेहम भेजते हुए कहा, जाइए, बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। Christmas. May this Christmas bring us a newness within ourselves. May it create a new era for Christ. So, me and my companions, we say aloud, Happy Christmas and Happy New Year. The beautiful Hindi Christmas hymn celebrating the birth of Jesus Christ. Let us journey to Bethlehem, the birthplace of Christ, and encapsulate the essence of Christmas with its vivid imagery of sheep, shepherds, the animals present in the manger. Let's welcome the sisters of Oblates of Nazareth to take on the stage and sing the carol. Hosanna,
time through your melodious voice of this beautiful carol. Behold the Claretian brothers on the stage to rock and roll with their heart-throbbing Nagpuri dance. Dear brothers, stage is yours to enticing our eyes and mesmerize us with your rocking steps. हे प्रभु यीशु तेरे लिए दिल है चमकेला आसमान में झाड़ू तारा टिम टिम चमकेला आसमान में झाड़ू तारा देखा गए तुलम में जन्म मिले सूरजा देखा गए तुलम में जन्म मिले मसीह राजा टिम टिम चमकेला
Father. Now it's time for the most awaited moment of our celebration, the cake carving. And to make this moment truly special, I would like to invite our dignitaries, the Archbishop, Right Reverend Vincent Ayn, and Reverend Father Ajit Marquez, the Provincial Superior, to join us on the stage. Please put your hands together as we welcome them. Liking of God. He likes to reveal His plan, and He likes to do things with those who are simple and humble. I think this theme is on many times through the Old Testament, and we find it again in the New Testament and very much during the Christmas narratives that we hear from the Gospels. For example, Mary herself is a person who comes from a very humble and perhaps unknown village, unknown for the scripture, unknown for the time she belonged, unknown for the geography of her time, Nazareth. So her village was not known and she was not known. Equally, Joseph, another very humble figure in every sense of the term. We don't even hear him saying a word. Again, we find sample of simplicity and humility in the shepherds, who were perhaps one of the lowest strata in the society. And to them, this good news is shared first. The angels proclaim to them that a Messiah is born for them. And so they have the privilege of visiting him first. Again, it's not just the humility indicated by your poverty and simplicity, but humility also in one's attitude and openness, and that we find also in the Magi. The three wise men, although they were wise, they were rich. Only the rich could afford such a long journey with several caravans of camels and many gifts, and not just gifts but also for their own journey they had to carry lots of provision, passing through desert land. And although they were wise and rich, there was humility in them. And contrast is the King Herod,
to whose palace they make the mistake of entering to inquire as to whether he knew such a great king was born in this area, and he was unaware. Also his people, the scribes who would serve the king, were not aware when they were questioned, but they referred to the scripture and they found that such a mention is there of Bethlehem. And so they told him, and so he in turn told the Magi, and so they went and once again they saw the star leading them to the place where Jesus was born. Herod, in contrast to the wise men, was not a humble person. His scribes, those who knew the scripture, were not humble persons. They had the scripture in their hands and yet they did not know. And so in all these connected events, we find God chooses the simple, the humble, to reveal His divine plan. If that is one message that we can draw from Christmas, I suppose, also in our way about, in our celebration, if we can adopt this attitude of humility, this attitude of simplicity, I think we will feel the presence of the Lord within our hearts and in the midst of our communities, in the midst of our families. And in that humility, perhaps, we can also share this good news that Christ is born to many more people. And therefore, my wish and message for you all this evening is that we imitate the shepherds, we imitate Joseph, we imitate the three wise men, we imitate Blessed Virgin Mother, and be humble, be open, and accept the Word of God, the message to each one of us coming from the Lord. Wish you a very happy Christmas and enriching blessings come down from heaven on all of you. Thank you very much, fathers, sisters. Thank you, Your Grace, for sharing such a profound and inspiring Christmas message. Your words reminded us of the true essence of this joyous season. Up next, our talented Ursuline novices are here to spread the Christmas cheer with a beautiful carol. Their melodious voices and heartfelt singing will remind us of the joy and peace that Christ's birth brings to this world. Yeah.
Thank you, dear novices, for bringing the spirit of Christmas alive. Coming up next, a vibrant performance on the song Sare Jahan Ka Mera Raja by candidates and novices of Missionaries of Jesus the Eternal Priest. Let's welcome the performers with a big round of applause, please. Sarsa mapadani sada, sarsa mapadani sada. का मेरा राजा, सारे जहां का मेरा प्रभु, दुनिया के पालनहारा हमरे कर यीशु राजा, चरनी में जन्म ले दुनिया के पालनहारा हमरे कर यीशु राजा, चरनी में खेला चला भैया देखे जाबुरी, चला बहन मिले जाबुरी, चला भैया देखे जाबुरी, चला बहन मिले जाबुरी। सारे जहां का मेरा राजा, सारे जहां का मेरा प्रभु, बढ़ते रहे स्वर्ग छोड़ धरती में आए, दुनिया में पाप बढ़ते रहे स्वर्ग छोड़ धरती में आए। सारे जहां का मेरा राजा, सारे जहां का मेरा प्रभु, पालनहारा हमरे कर यीशु राजा, चरनी में जन्म ले दुनिया के पालनहारा हमरे कर यीशु राजा, चरनी में खेला चला भैया देखे जाबुरी, चला बहन मिले जाबुरी, चला भैया देखे जाबुरी, चला बहन मिले जाबुरी। सरसा मपधानी सदा, सरसा मपधानी सदा। का मेरा राजा, सारे जहां का मेरा प्रभु, सारे जहां का मेरा प्रभु, दुनिया के पालनहारा हमरे कर यीशु
यीशु राजा चरनी में जन्म ले दुनिया पर पालनहारा हमरे पर हंसी राजा चरनी में खेलते सजा भैया देखे जाबुरे सजा बहन मिले जाबुरे सजा भैया देखे जाबुरे सजा बहन मिले जाबुरे Your energy, grace, and enthusiasm truly jubilated us, dear novices and candidates. The CRI gathering has made this gathering a joyful one. I now invite the President of CRI Ranchi Unit, Reverend Father Justin, to express his note of gratitude. Most Reverend Archbishop Vincent Hine, esteemed provincials, directors, superiors, dear parish priests, and valued CRI members, brothers and sisters, on behalf of the entire community present here, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for making this Christmas gathering a grand success. As we conclude this joyous occasion, it is my privilege to express our sincere thanks to all those who have contributed to making this event memorable. First and foremost, definitely, I wish to thank His Grace, our beloved Bishop Vincent Hine, who is always with us, always supports us and squeezes his time for all of us. Today again for gracing us with his presence and for his inspiring message that has filled our hearts with hope and joy. Your continued support and guidance are invaluable to us, dear Bishop Swami. I would also like to extend my deepest appreciation to the provincials, especially Reverend Father Ajit Kumar Kes, Ranchi Jesuit Provincial, who is always with us, leading us, guiding us, directing us, supporting us, and always be a strength. He remains a strength to us and all the CRI members and to all of us every time on every big occasions. All others, provincials and superiors who have travelled from near and far to be with us today. Dear provincials, superiors, matas, novice mistresses and superiors, your leadership and dedication to our mission are truly commendable. Thanks to our Reverend Father David Anand Khalko, Parish Priest of Ranchi Cathedral and Vicar General of Ranchi Archdiocese, who has been for this occasion from the day one. He has been with CRI members, he has been guiding us, telling us how to move about. He was the one instrumental part of the special team to meet His Excellency Governor, and till the end he has been with us, and we see the fruit and we share the joy of the whole planning and execution of planning in a very successful way. He has also promised that he will be a special support in his own way. He will be a Santa Claus to this event. He told to CRI brothers, fathers, that he will support us in a special way. I think he will be our Santa Claus for this event, so thanks to him in a very special way. To conclude this, may the spirit of Christmas continue to inspire us all
bringing peace, joy and love into our hearts and homes, and continue to make every little event for Christ a meaningful one, magnificent one and memorable one. And I have a great energy inside now to tell, we, as far as we are here, as far as we come together for a meaningful purpose, a noble cause, definitely if we cannot change the whole world, we can give hope to this world, hope to Ranchi Archdiocese, and hope to the whole world. And if we have hope, we are always alive and living, and we have always a moment to cherish together. Thank you again. Thanks to each and everyone, and may God bless us all. Happy Christmas and Happy New Year. Thank you, Father, for thanking each of us. Once again, the St. Xavier's Choir is ready to sing a carol.